Namaste, dear bachcho. I hope you are enjoying my class and let us continue with our discussion, right? Previously, we have seen pure substances and mixture. Mixture contains two or more substances that are mixed, simply physically mixed in any ratio. This is the basic difference between a compound and a mixture. A mixture contains components mixed in it in any ratio. So composition of a mixture is variable. Let me give you one example for this. आपके पास भी नींबू पानी है, मेरे पास भी नींबू पानी है, तो क्या आप बता सकते हो कि आपके नींबू पानी और मेरे नींबू पानी में सेम अमाउंट ऑफ शुगर सॉल्ट रहेगा या नहीं रहेगा? नॉट नेसेसरीली वी बोथ हैव सेम अमाउंट, राइट? सो इफ यू गो टू डिफरेंट शॉप्स टू हैव lemon juice, okay, then different lemon juice may have different sweetness, may have different saltiness in it. कोई खट्टा होगा, कोई ज़्यादा मीठा होगा, तो that is called variable composition, right? Air is a mixture, so composition of air is variable, it varies from place to place. अगर आप जंगल में चले गए तो वहाँ ज़्यादा ऑक्सीजन होगा, अगर आप शहर में आ गए तो वहाँ ऑक्सीजन रिलेटिवली कम होगा, पॉल्यूटेंट्स ज़्यादा रहेंगे, राइट? सो in between the city pollutants are more. If you go to highway or interior place where there is less vehicular pollution, vehicles कम है तो वहाँ pollutants कम रहेंगे, right? So components of composition of mixture is variable. कोई fixed composition नहीं है, यानी percentage fix नहीं है, whereas compounds है उसका composition fix रहेगा. अगर आपके पास भी पानी है, मेरे पास भी पानी है, तो उसका क्या composition है, यानी पानी तो प्योर सब्सटेंस है, प्योर कंपाउंड है, तो आपके पास जो पानी है उसका भी फॉर्मूला H2O है, उसमें भी वाटर मॉलिक्यूल्स है, मेरे पास भी पानी है, कहीं से भी मैं पानी लेके आया हूँ तो उसका भी केमिकल फॉर्मूला H2O ही रहेगा, क्योंकि वो सिंगल सब्सटेंस है. सो केमिस्ट्री में प्योर सब्सटेंस मीन्स सिंगल सब्सटेंस, whereas when you mix two or more substances it is called mixture, and composition of mixture is variable, can be varied. यानी अगर आपने एक ग्लास पानी ले लिया तो उसमें एक चम्मच सॉल्ट भी डाल सकते हो, 2 चम्मच भी डाल सकते हो, 3 चम्मच भी डाल सकते हो, तो कंपोजिशन कैन बी वेरिड, राइट? सो pure substances are made up of only one kind of particles, and these particles can be atoms या तो molecules, right? Molecules यानी group of atoms. तो एक टर्म आपने सुनी हुई होगी कि pure substances are either elements or compounds. So let us discuss what are elements. What is an element? An element is usually defined as the simplest form of pure substance. Simplest form यानी it cannot be broken down into more simpler substances. जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था, प्रीवियस वीडियो में, कि you can break down a compound into its constituent elements. आप वाटर को स्प्लिट कर सकते हो बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट इनटू इट्स कंपोनेंट्स, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में. वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. लेकिन अगर आपके पास हाइड्रोजन है, प्योर हाइड्रोजन गैस, you cannot break down hydrogen into more simpler substance. Hydrogen is simplest substance. So an element is usually defined as the simplest form of a pure substance with definite physical and chemical properties. जैसे हमने पहले भी बताया कि जैसे आपका और मेरा नेचर अलग अलग हो सकता है, ऐसे ही हर एक सब्सटेंस का नेचर अलग अलग है, तो वो हमको केमिस्ट्री में पढ़ना है. तो different substances or different elements have different physical and chemical properties and that are characteristic of that element. यानी अगर मैं आपको कोई जानवर की कैरेक्टरिस्टिक बता दूं तो आप जानवर आइडेंटिफाई कर सकते हो, ऐसे ही मैं आपको कोई कैरेक्टरिस्टिक बता दूं तो उस पर से वो एलिमेंट आइडेंटिफाई हो जाएगा, राइट? सो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर नोन फ्रॉम देयर प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज. कैरेक्टरिस्टिक यानी यूनिक प्रॉपर्टीज. So an element is defined as the simplest form of pure substance with some definite physical and chemical properties and which can neither be broken into nor built from. आप उसको ब्रेक डाउन भी नहीं कर सकते और बना भी नहीं सकते. यानी जब नेचर, जब सृष्टि की रचना हुई, जब सर्जन हुआ, तब एलिमेंट्स थे, नेचर में एलिमेंट्स थे. वी कैन मिक्स एलिमेंट्स, वी कैन रिएक्ट एलिमेंट्स एंड फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स, लेकिन आप एलिमेंट्स नहीं बना सकते, राइट? सो दे आर द सिंपलेस्ट फॉर्म विच कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू नॉर बिल्ट फ्रॉम. यू कैन नॉट मेक एलिमेंट्स.
from simpler substances by any known physical method. In other words, an element is defined as a pure substance that contains only one kind of particles, and these particles can be atoms or molecules. Like आप ले लो कॉपर, कॉपर एक एलिमेंट है, तो कॉपर इज मेड अप ऑफ कॉपर एटम्स, एटम्स ऑफ कॉपर. आप सोडियम ले लो, सोडियम एक एलिमेंट है, तो सोडियम इज मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम. आयन ले लो, तो आयन इज वन एलिमेंट. Okay, iron is made up of atoms of iron. Similarly, oxygen is one element, hydrogen is one element, chlorine is one element. तो ऐसे एलिमेंट्स है, तो आपको एलिमेंट्स के नाम याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि जिसके नाम याद रखने उसकी तो पूरी केमिस्ट्री आगे जाके आएगी. तो एटलीस्ट यू मस्ट स्टार्ट विथ रिमेंबरिंग नेम्स. तो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट पीरियोडिक टेबल. यू कैन गेट वन पीरियोडिक टेबल, यू कैन see it in your chemistry textbook, or you can download from internet and paste it somewhere in the house and regularly read it. Okay, you can start with 10 elements, then after remembering 10 elements you can go to another 10 elements, and then you can remember names of elements. और उसको ऑर्डर में याद रखना है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टन. ये मैंने 36 एलिमेंट्स बोले. ऐसे जितने भी आप याद रख सको. टिल 10th स्टैंडर्ड यू आर सपोज टू रिमेंबर 20 एलिमेंट्स till calcium, and for higher classes you need to remember more number of elements, right? So just start remembering. It is just repetition of names. जैसे आपके क्लास के 30, 40, 50 स्टूडेंट्स, सबके नाम आपको याद है, आपके फैमिली मेम्बर्स में जितने भी है सबके नाम आपको याद है, रिपीट कर करके. ऐसे ही ये एलिमेंट्स के नाम आपको याद रखने हैं. सो कॉपर इज वन एलिमेंट, इट इज मेड अप ऑफ कॉपर एटम्स. हाइड्रोजन इज वन एलिमेंट, बट सिंगल एटम ऑफ हाइड्रोजन इज अनेबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. वो स्टेबल नहीं है. तो एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन होके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो ये हो गया मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल यानी ग्रुप ऑफ एटम्स. तो इसको हम ऐसे लिखते हैं H2. सो H2 मीन्स दो हाइड्रोजन एटम. सिमिलरली ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, आपको पता है एटमोस्फियर में ऑक्सीजन है. So 2 atoms of oxygen, या आप सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड की चिंता छोड़ दो, वो आगे जाके आएगा. सो आपको ऐसा याद रखना है कि हाइड्रोजन की फॉर्मूला H2 है, ऑक्सीजन की फॉर्मूला O2 है. सिमिलरली नाइट्रोजन इज वन एलिमेंट, नाइट्रोजन की फॉर्मूला N2 है. क्लोरीन की फॉर्मूला Cl2 है. आपने ओजोन का नाम पढ़ा होगा, ओजोन आपने पढ़ा है. ओजोन गैस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन दैट इज कमिंग फ्रॉम द सन. सो ओजोन is made up of 3 oxygen atoms, so we write it like this. Similarly आपने phosphorus एक एलिमेंट का नाम पढ़ा होगा, phosphorus. तो phosphorus molecule contains 4 phosphorus atoms, so we write it as P4. आपने सल्फर करके एक एलिमेंट का नाम सुना होगा, सल्फर. सो अ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर कंसिस्ट ऑफ 8 सल्फर एटम, तो उसको S8 लिखते हैं, राइट? लेकिन सोडियम है, सोडियम, तो सोडियम मोनोएटोमिक यानी एक सिंगल एटम है, Na लिखते हैं. आयन है, आयन को हम Fe लिखते हैं, राइट? तो ऐसे ऐसे फॉर्मूलाज आएगी. तो ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूल. So examples of elements are written here, and few more elements I have written. You need to remember names, right? So element is the simplest substance, simplest kind of pure substance which cannot be broken down or cannot be built from any other more simpler substance, right? So this was about element. Now elements have different nature. Okay, we have many different elements with different characteristic, different properties. तो एक टाइप का एलिमेंट है जिसको मेटल्स बोलते हैं. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट मेटल्स एज ए नेम. सो अ मेटल इज अ टाइप ऑफ एलिमेंट. इट इज अ मटेरियल दैट
जैसे इसमें क्या है, डेफिनेशन कैसे है, जिसकी ऐसी 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 प्रॉपर्टीज है उसको मेटल्स बोलते हैं, जिसका ऐसा 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 नेचर है उसको नॉन मेटल्स बोलते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टीज यहां लिखी हुई है, राइट। सो मेटल इज अ मटेरियल दैट, कैसा मटेरियल है, व्हेन फ्रेशली प्रिपेयर्ड, जब आप उसको बनाते हो फ्रेश, पॉलिश्ड, या तो आप उसको पॉलिश करते हो, अगर पुराना है तो पॉलिश कर लिया, या तो फ्रैक्चर्ड कट कर दिया, शोज लस्ट्रस यानी शाइनिंग, शाइनिंग सरफेस, लस्ट्रस यानी शाइनिंग, अपीयरेंस, अपीयरेंस, ओके, दिखावा, अपीयरेंस। सो मेटल इज अ मटेरियल विच when freshly prepared या तो polished या तो fractured shows lustrous या तो lustrous appearance, and another property is it conducts electricity. Metals are good conductor of electricity. The wires that are there in your house which conducts electricity from one place to another are made up of metals. Those are metallic wire. तो इसकी property है कि metals are good conductor of electricity. They are also conductor of heat. यानी अगर आपने सपोज ये मेटल पीस है, अगर वन एंड को मैंने हीट किया, गर्म किया, तो आफ्टर अ वाइल द अदर एंड विल ऑल्सो बिकम हॉट, ओके। सो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स आर टिपिकली मेलिएबल, ये मेटल की प्रॉपर्टी है, मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल का मतलब दे कैन विथस्टैंड हैमरिंग, अगर आप उसको हैमर करोगे दे कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स, okay. Metals can be beaten down into thin sheets, SHEETS, see the spelling, right? And they are ductile, means they can be drawn into wire. एक डाई में से आप पास करोगे उसको फोर्सेबली तो वो एक वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी metals can be beaten into thin sheets and they are ductile. ये प्रॉपर्टी को malleability बोलते हैं, conversion into thin sheets, or ductility यानी they can be converted into wires. A metal may be a chemical element such as iron, or it can be alloy such as stainless steel, right? So lithium is one metal, sodium is one metal, potassium is one metal. We'll come to symbols of elements, how these symbols are derived, right? So अभी मैं just बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तो these are symbols. Chemistry contains many symbols, okay. There is symbolic representation of elements. So instead of writing lithium completely, we just show it by symbol Li. So this is lithium, sodium. Now the name of sodium is derived from Latin. Some names have Latin origin, some have Greek origin. There are wonderful stories behind that. If you are curious to know, you can just Google it, right? So the word sodium is derived from Latin word natrium. Natrium. Natrium per se symbol NaIr. Lithium per se symbol. Usually these symbols are first two letters of their names, and some names are derived from Latin or Greek or German or some English origin, right? So this potassium symbol is derived from Kalium, so K, right? So lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. These are all metals: lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium, magnesium, calcium, strontium, barium, radium. All these are metals. Aluminium is a metal, iron is a metal, copper is a metal, lead is a metal, mercury is a metal, right? So you must know more than 80 elements in the periodic table, okay. Out of total 118 elements are there in the periodic table. Somewhere around 93 elements occur naturally, and the subsequent elements are synthetically prepared in the laboratory, right? By bombarding one element with another element. Two atoms are fused together to form new elements. So there are so many elements that are metallic in nature. So these are the common metals that we use, okay, whose chemistry you are going to study.
those will be more frequently appearing in our discussion, right? So lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium, magnesium, calcium, strontium, barium, radium, aluminum, iron, copper, lead, mercury, and so many other metals are there. Okay, so these are metals, and some metals can be mixed to form an alloy. Metal mixtures are called alloy, right? Like stainless steel. Okay, stainless steel contains iron, mainly base metal. It contains chromium, it contains nickel. Chromium and nickel are also metals, right? So, and there is small proportion of carbon in steel, right, to make it hard. So, this is definition of metals, right? So, these are basically the properties of metal that describes the definition, what are metals. Now, the opposite category is known metals. A known metal is a chemical element that mostly lacks characteristics of metal. Mainly जो metal नहीं है उसको known metal बोलते हैं, जिसकी metal की properties नहीं है, अलग property है, उसको known metals बोलते हैं. तो physically a known metal tends to have a relatively low melting point, boiling point and density. Metals are usually dense. There are exceptions in it. Sodium and potassium are lighter than water, they float on water. Otherwise, metals are usually dense, whereas known metals are less dense, they have relatively low density. Metals usually have high melting and boiling point, known metals tend to have low melting and boiling point. A known metal is typically brittle, यानी वो ब्रेक डाउन हो जाएगा जब उसको हैमर करोगे. मेटल्स आर मेलेबल, दे कैन विथस्टैंड हैमरिंग. उसको हैमर करेंगे तो वो पाउडर नहीं हो जाएगा, वो थिन शीट्स में कन्वर्ट होगा. वैसे नॉन मेटल्स, अगर आप कोल ले लो, कोलसा, राइट, तो उसको आप हैमर करोगे तो वो पाउडर हो जाएगा, तो वो ब्रिटल बोलते हैं उसको. तो known metal is typically brittle when solid and usually have poor thermal and electrical conductivity. Metals are good conductor of heat and electricity, known metals are poor conductor of heat and electricity, right? So, and third category is metalloids. Okay, elements are either metals, known metals or metalloids. So, a metalloid is a type of chemical element which has properties in between. बीच का है वो, नाइदर वो पूरा मेटल है, नाइदर वो पूरा नॉन मेटल है. तो दे हैव प्रॉपर्टीज इन बिटवीन. उसमें पूरी तरह मेटल्स की भी प्रॉपर्टी नहीं है, पूरी तरह नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टी नहीं है, एंड दैट हैव ए मिक्स्ड प्रॉपर्टीज ऑफ दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. There is neither a standard definition of metalloid. कोई perfect definition नहीं है metalloid की. यही definition है कि they have properties in between metals and non-metals. और ये देखो, complete agreement on nor complete agreement on elements appropriately classified as such. यानी पूरी दुनिया में साइंटिस्ट के बीच में कोई एक मत भी नहीं है, यानी कोई कंप्लीट एग्रीमेंट नहीं है कि किसको मेटलॉइड बोले. कोई बोलता है नहीं ये मेटल है, उसकी ज़्यादातर प्रॉपर्टी मेटल्स की है, कोई और बोलेगा नहीं उसमें ये एक दो प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की है तो इसको मेटलॉइड में क्लासिफाई करो. यानी दे विल नॉट एग्री टू के this element is metalloid or a metal or a non-metal in some cases. So there is neither a standard definition of metalloid nor complete agreement on the elements appropriately classified as such कि ये metalloid ही है. Despite the lack of specificity, यानी unclear है, clarity नहीं है definition में, despite this, उसके बावजूद the term remains in use in literature of chemistry. हम ये term use करते हैं. The 6 commonly recognized metalloid, यानी पूरे दुनिया में ये 6 एलिमेंट है जिसको पूरी दुनिया रिकॉग्नाइज करती है कि ये मेटलॉइड है. तो इसमें है बोरोन का सिंबल B है. सिलिकॉन जो सेमीकंडक्टर में यूज होता है Si. जर्मेनियम जो भी यूज होता है सेमीकंडक्टर्स में Ge. आर्सेनिक As. एंटीमनी Sb. एंड टेलूरियम. तो बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री टेलूरियम और एंटीमनी की नहीं पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये सिंबल्स है आपको याद रखने, और यू नीड टू रिमेंबर दैट दीज आर मेटलॉइड्स, राइट. सो when you come to our next class, you must just go through all the definitions of these things. We are going to frequently
make use of these terms. So you must be absolutely clear. If you have any doubts, want me to explain a particular term in detail, you may just comment in the comment section, right? So hope you are enjoying, and we'll be progressing with our topics in the subsequent lecture. Join edge.in for many more videos. Thank you.